in many sector ଆଉ ଏଟା बिजनेस आइडिया भी हमको बनी जाइए संदीप माहेश्वरी हम देखि परिबा आगे बा तू कोड जाइतलु कि रे इकोनॉमिक्स क्लास भी कलुनु तू करथलु आगु पळे आसन पळे आगु ए मंटू डाकिला मुंह गोटे बढ़िया लोक को दो डाउट र इंटरेक्शन भी करे प्रॉब्लम टा कहले सॉल्यूशन टा देई टिके जे ऑनलाइन ना अच्छा टिके अब टिके जो तुम्हें मन के समय बाहर कर ये आंसर मन क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन करियो ମାନେ ତୁମେ ପଢୁଛ ପଢାଟାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର ସେ କଲେକ୍ସନ ଟା ଜରୁରୀ ଅଛି ବୁଝିଲ ଯୋଉ ସମୟ ତୁମେ ମତେ ସଜେଷ୍ଟ କର ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ କହୁନି ତୁମ ଟାଇମ ତମେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କର ତ ଏବେ ମତେ ସଜେଷ୍ଟ କର ପୁରା ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ କରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଇ କରୁଛି ଆ ପର ଏକ୍ସାମ ଟା କଣ ରହିବ ଏଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ ର ମୁଁ କରେଇବି ତ ସେଭେନ ଚାପ୍ଟର ସର୍ଟ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ କରେଇବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଟାଇପ ର କରେଇଛି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତିନିଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ ହବ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ ହବ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଅର ୱାଇଜ ଲେଖା ହବ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି এটা ଆମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମକୁ ସେଭେନ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଯଦି ଏ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜ କରିବା ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର 100% ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡାଉଟ ଅଛି এটা 100% ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ବୁଝି ସାର ତାପରେ ମୁଁ ଦିନେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଅ ମଣ୍ଟୁ ଏ ଦିନ ସହିତ ଆଉ କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବ କେମିତି କୋଉ ୱେରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଜିନିଷ ବି କହିବି ଏଇଟା ହଉଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ଯୋଉ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କେମିତି ଲେଖା ହବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ବହିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖ କନସେଣ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଜରିଆରେ କଣ ନଉଛେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ ଏ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉଛି କାରଣ କାଉନସିଲିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ ଲିମିଟେଡ ହେଇନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ এটা এনকরেজমেন্ট অফ এনি অর্গানাইজেশন এনকরেজমেন্ট অফ এ পর্সন বুঝি বুঝি যেମିତି କି ଆକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯୋଉ କାଉନସିଲିଂ ମାନେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ସବୁ डिफरेंट डिफरेंट सब बाहर डिफरेंट गुरु सब बाहर मोटिवेशनल प्रकार लाइफ रे हमें एते स्ट्रेस नउचे तेणु से स्ट्रेस रो सॉल्यूशन बाहर करबा को हेले ए सब मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलिंग रो जरूरत अछि काउंसलिंग केवल लिमिटेड रहउनी केवल ट्रीटमेंट पे इट इज द वर्क इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट एरिया एजुकेशनल काउंसलिंग रहउची मते राइट वे बा राइट पाथ कोटा मु चूज करिबी लाइफ काउंसलिंग रहउची कौन सी हजबैंड वाइफ भीतर झगड़ा होची सेथिरे भी काउंसलिंग रहउची तांकर फैमिली टाको बढ़े न ए सब डिफरेंट पार्ट सब हमर रहउची
The role of the counselor carries great significance as their profession directly impact the well-being and well-being of the society. However, during the course of their profession, they may face many ethical dilemmas that may affect their image and social identity. Okay. However, during the course of their profession, they may face many ethical dilemmas that may affect their image and social identity. Ethical dilemma means what? What is the word of the dilemma? Confusion जोड़ा कहे बुझ मु एटा करिवे कि सेटा करिवे प्लस तांकर कोन हुए तांकर इमेज प्रति भी खराब আছে बुझिला. Both the ethics and law are crucial in the action and well-being of the counselor that are the counseling process. Directly and indirectly, maintenance of ethical code of conduct on the part of the counselor not only enhances their competency and dignity as a counselor, but also promote professionalism in counseling. केवल से माने counseling, it is not the process of से माने निज को promote करिवा किंतु तांकर जो प्रोफेशनलिज्म काउंसलिंग ताकू भी बढ़िया को दरकार. Counseling, it is not like you are giving a suggestion. Counseling is a profession. Profession means you require the professionalism. मते गोटे प्रोसीजर हिसाब रे जीवा को पड़े. जेमते कि गोटे टीचर जते बडे एंटर करछे कोनोसी क्लासरूम रे प्रॉपर ड्रेस अप आसी से ना कि जो माने कटिंग जींस कट वाला जींस हाड़ा ही आसीबा तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम. जदि हमर लुक एंड फील न रहबा हमें एक्सेप्ट करि परिबा नहीं. तुमे जते बडे कोनोसी मैरिज पार्टी को जाउछो जे बडे कि जाउछो तुमे तरे एठी के आसीबो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज़ तारा एनवायरनमेंट अलगा आरा एनवायरनमेंट अलगा बुझी होची सेठी बरजात्री रे तमे जतले पाठ पढिया गसियो बरजात्री गलाळे आसीबो न नाचे गई बुझी होची. सो ड्रेस अप एंड प्रोफेशनलिज्म इज अ डिफरेंट. गोटे होची जतरा हमें प्रोफेशनली हमें एक्सेप्ट गोटे टीचर को हमें एक्सेप्ट केते करू हमें तांको पाखरे क्वालिटी देखो एज अ टीचर हिसाब रे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केमती जानू हमें पछरे पढ़ा जानू प्रथम हमें केमती जानू ड्रेस अप लुक एंड फील ऑफ दैट पर्सन. the personal look and feel केमती रहउची आ ता ड्रेस अप केमती रहउची ताको बेस करके हमें डिफाइन करू. बुझिला कि नहीं. Keeping in the view, the following factor need to be taken care of: the honesty and sincerity. The counselor-client relationship is the foundation of the counseling process. A client comes to the counselor as a last resort, hence the counselor must act in the best interest of the client with the intention of positive outcome. The counselor-client relationship is the foundation of counseling process. All client comes to the counselor as a last resort. माने मो पाखरु सब जिंस सरी जाईची मो हारी जाईची तो ए लोक पाखकु आसिले मो गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट मो पाइबी बा ए लोक जहा कहइबो सेटा ही मोर लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहइबो. तर जते बेले गोटे लोक काउंसलर पाखकु जते जाय जते बेले से संपूर्ण डिफीट रहिताय निजर लाइफ सर्कल को नै तो सेते बेले कोन हबो मोर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी एज ए काउंसलर एटा आउरी बढी जीव जे मु ताको फेथ देबी दैट आई हैव अ सॉल्यूशन टू योर लाइफ. Okay. So from the ethical point of view, the counselor is expected to maintain confidentiality with regard to the problem or client, his and her client. तो प्रथमे मते कोन करिया पड़िबो मो पाखो जे प्रॉब्लम ने कि आसीची से प्रॉब्लम ता तार प्रॉब्लम ता जेटा कॉन्फिडेंशियल रहइबो. आई एम नॉट शेयरिंग टू द अदर. सपोज तमे देखिनियो मोडे हस्बैंड और वाइफ को काउंसलिंग करबी तांका भीतर झगड़ा होची किंतु जेतले मो तांको इंडिविजुअल काउंसलिंग करिवि से माने जो पॉइंट ऑफ व्यू मते देबे मु से पॉइंट ऑफ व्यू ना वाइफ रो हस्बैंड को कहबी ना हस्बैंड रो वाइफ को किंतु ता भीतर मु एनालिसिस करी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू रे तांकर भीतर झगड़ा होची ता भीतर मु एनालिसिस करी कि गोटे पॉइंट ऑफ व्यू मोर निजर बाहर करबी जा कि से माने तांको भीतर निजर कोन आसीबो तांको भीतर किछि अनकॉमन थिबो जा पे झगड़ा होची किछि कॉमन जिंस थिबो जा कि मु ताको फाइंड आउट करबा तुम जोड़िया को चेष्टा कर किंतु आर वीकनेस ताको तार वीकनेस ताको कर देले कोन हो झगड़ा बुझियो छ नै कई लागंती तुम देखियो गां मान करे जो स्त्री लोक माने खरा बेले सब काम फाम सरी गेला आउ जन घर जी ता घर रो सब जिंस आनी कथा आनी जाय कि आउ जन घर पसिबे ता घर कथा आ घर पाखर गप
तापर कौन हम दी घर भीतर झगड़ा हम फैमिली फैमिली भीतर झगड़ा बुझी हूँ the counselor sooner impose their value on their clients. Rather, they should be given ample freedom to express their problem, their goal, and choices as the matter is connected to their life. तो सेठी काउंसिलर कौन करिवो ना निजुको प्रायोरिटी दबन से निजु कहबो ना आई एम द बिग काउंसिलर आई एम द बिग पर्सनालिटी से सेतबेले निजुको बड़ बोली कहबोनी से कहबा आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर्सन मु तमरो प्रॉब्लम टाको सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड करी तो आई एम योर फ्रेंड यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीडमली व्हाटएवर द थिंग यू वांट यू कैन एक्सप्लेन तम फ्रीडमली तमे जहा जहा जिंस गुडा कहबो मु तुमको एक्सप्लेन करी कहबो ना कि मु निजको बड़ बोली कहबी आउ फ्रीडम टाको मु छड़े मु निजको निज पर्सनालिटी को बड़ करी ताले से कौन करिवो इंडिपेंडेंस पाइबनी ता प्रॉब्लम टाको मते कहबो बुझिला कि नहीं any important information about the client and his problem should be recorded with their knowledge and its purpose should be made very clear to them. This will be strengthen their trust. Any important information about the client and his problem should be recorded. जहाँ जहाँ problem आसीबो से problem टाको से कौन करिवो record करके रखिवो आउ तार solution से दो से solution देले जदि मु record करके रखुची information ताले तमे जानिबो जे नोट करी कहि दे कि जेमते कोन प्रॉब्लम हैला तरुण आउ यस कहले if I am not recording then I will forget मु एबे सिना मन रखि देली किंतु लैटर मु ताको रिकॉल करबे अरे कोन प्रॉब्लम कहउतले तार सॉल्यूशन टा कोन रही तनो if it is noted then you having a trust it is if it is noted then there must be a solution sir लेखि के रखले माने तार सॉल्यूशन मिलिबो आउ मते जदी कहि देबो ताले को हबो maybe is a human mind at the point of time if I am busy with the other work then I forget बुझले कि नहीं the role of the counselor is to help the client to develop insight to his problem to identify the sources and causes behind his problem then to suggest alternative to get out of it okay the role of the counselor to help the client to develop insight the problem to identify sources and causes of the problem क्लाइंट आसी बता प्रॉब्लम नहीं की तो मु क्लाइंट को एमती इनसाइट करीबी जे तुम्हें ही निजे हुआ जे प्रॉब्लम टा काहे की आसे द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम व्हाई इट इज जनरेटेड तो आई एम गिविंग ए फ्रीडम एंड आई एम गिविंग ए पाथ सो दैट से कम करिवो इजीली एते फ्रेंडली मो सहित मिसिबो तार सोर्स ऑफ प्रॉब्लम टा से मते कहि दो तो एई कारण जगह हम भीतर झगड़ा हो देन under no circumstances the counselor should take the decision for his client rather he should create the necessary condition so that client could take its own decision मुझे झगड़ा हो ताले कोन कर दियो जाओ ते कोर्ट रे छाड़ा पड़तो देन मेक इट डिवोर्स नॉल तू गोटे खंडा दा तू गोटे खंडा दा बाड़े बाड़ी ओके बट मु तो पाखरे ऑप्शन रखी राति रे बाड़िया बाड़ी होबा पई तो पाखरे चारटा ऑप्शन रहला छुरी दीटा नै कि जो ताकू गोटे दबो तू गोटे न डिवोर्स नबो तंती चिपा चिपी हो तापर होची नै सांग हेकी रहियो none of this okay हां तो ऑप्शन हमें दबा ऑप्शन दबा सी तापर चूज करियो जे ना ये पूरा एक्सट्रीम हे गला तो खंडा धरि के मरा मरे ओके ना कि मु कहि देबी जे तू जा एमनी झगड़ा आइती तो तू ता खंडा दा तक मार तो आई विल क्रिएट ए सिनेरियो दैट ए पर्सन विल चूज द ऑप्शन फ्रॉम इट ते मु आ भीतर को ऑप्शन टा मोर बेस्ट होबा माको चूज करी निजर ओन डिसीजन सेटा रहइबो हेले कोन हबो लैटर काउंसलर ब्लेम हबन काउंसलर कोन करिवो त से गोटे ट्रिक तार प्रॉब्लम टा को एनालिसिस करिकि से एनालिसिस केतेटा आउटकम बा केतेटा रिजल्ट हेई परिबो जदि मु से ऊपर जीबी से ताको डिफाइन करदो ता भीतर क्लाइंट चूज करिवो नै एई प्रॉब्लम रो जदि मु जीबी बा आर सॉल्यूशन ने जदि मु जीबी ताले मु रिजल्ट पाई बुझले कि नै creating unnecessary dependency in a client is unethical it should be strictly avoided
creating unnecessary dependency in a client ऊपर पूरा डिपेंडेंट हवा क्लाइंट तुम ऊपर डिपेंडेंट हवा तो डिसीजन ना आपण जहाँ कह हम तो सहीटा हूँ कौन इट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड कारण काउंसलिंग इज द प्रोसेस टू मेक द पर्सन इंडिपेंडेंट टू मेक द डिसीजन मु ताको एमिति एनकरेज करेबी ता भितरे ओन जो चॉइस रहिबो बा तार निज भितरे गोटे क्षमता रहिबो जे मु निजे निजे कोनोसी डिसीजन नै पारि the relationship between the client and the counselor should be only at the professional level. There should not be any kind of physical intimacy between them. This is purely unethical and it will simply destroy the very purpose of counseling. Its effect is also very harmful. बुझे गोटे काउंसिलर थी स्वामी स्त्री झगड़ा तो स्वामी सहित झगड़ा ठीक है तुम बच बस भाई ओके सो एमती हेले कौन हम से लोकटा तू एमती जदि आउ 5-6 स्त्री लोक आसवे केतरा बाहु कारण एटा कौन आसीबो तो अनएथिकल गोटे इन ए क्लाइंट क्रिएटिंग अननेसेसरी डिपेंडेंसी हेबे माने काउंसलर हो माने मु तर सॉल्यूशन देबी माने मु हां हां तू आसे धर तते कहलु सर मते साइकोलॉजी रो ए प्रॉब्लम ता अछि मु बुझी पारु मते कहै मु कोन कहले मु कहले अच्छा ठीक अछि तार मु कोन करबा अच्छा तो प्रॉब्लम या अछि मु आरो सॉल्यूशन देबी मंडे दिन देबी बिटवीन दिस टाइम यू हैव टू चूज वन टाइम मु कहै मारे मु 11 टा गोटे कथा अछि तो घंटे कौन सी टाइम चूज कर आ मते कर तो ना ना मु 11 टा सार उठी पारुनी मु सोई की रहउची आ 3 टा आसला बुझी होची दैट मींस मु फुली डिपेंडेंसी हेली मु कहली मो वे रे आसीबो मो रूल रेगुलेशन आसीबो एंड आई एम गिविंग ए चॉइस अगेन मु तते चॉइस देछि कोन देछि 11 टा रो 12 टा 12 टा रो गोटे ता भीतर तू चूज कर चॉइस तो पाका चॉइस भी रहिला स्ट्रिक्टनेस भी रहिला डिपेंडेंसी भी रहिला बुझी पाछो सब दिन सारा तो हमर काउंसलिंग प्रोसेस टा एमती होवा दरकार जादे कि अननेसेसरी डिपेंडेंसी मु ता पाकरे हेबिनी बट मु ताको भी चॉइस दे परिबी जे तू एई वे रे करि पारि बुझला The counselor must maintain their personal and professional honesty. There should not be much, there should not be any such motive to malice and getting personal benefit. Personal benefit मु सेटो जेमती एक्वायर न करिवि मो पाखरे सेते कि ऑनेस्टी रहिबा दरकार मु देखिबि आ पाखरे बेसी पैसा अछि त केसेस को लिंगरिंग करिकि नेकी चाहि त पैसा झड़िया चक्कर रहि किछि प्रोफेशनल डीलिंग रे रहिबि जेम देखिबि सपोज धीरू भाई हम जो अनिल अंबानी झील आसते प्रॉब्लम नहीं कि मालटा अधिकार है आइदर कौन करी ना ताको एमिति मोटिवेट कर तू मत बाहा है ताले मु कौन करी गोटे कंपनी मालिक होती तार डीलिंग हेले कौन हम आई एम लिमिटेड विथ द वन केसेस ओनली आई एम नॉट बिकम द प्रोफेशनलिज्म इन माय वर्क ओके इट शुड बी सेम टू अदर्स समस्त जिनस सेम रहिबो इफ देयर इज ए वन प्रॉब्लम देन इट इज गिविंग ए सॉल्यूशन सपोज तो कहबो मते ए चैप्टर रा ए पॉइंट ता मोर डाउट रही मे बी यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड यू आर टेलिंग दैट आई हैव ए प्रॉब्लम ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक अन्य माने इंट्रोवर्ट थे से माने कहि पारु नथि किंतु मु कोन करबी ग्रुप रे शेयरिंग करबी ए टॉपिक ऊपर जहां डाउट अछि आसे कि रेडी के आसे ताहले कोन हबो ना समस्त ता भीतर रेडी नै सर कि दिटा आइडेंटिफाई करले ओके जाओ नै मोर भी प्रॉब्लम अछि मु आरो सॉल्यूशन रे भी पाई बुझिला कि नहीं तो यहाँ कौन है यहाँ आदरे मुझे कौन कहली ना मोर प्रोफेशनलिज्म मेंटेन बुझिला कि नहीं किंतु जदि इंटरपर्सनल आम जदि आमको जीवा धर गोटे प्रॉब्लम अच्छी तू कहबू अच्छा मोर प्रॉब्लम अच्छी अच्छा हो ठीक अच्छे कौन करवा ना आफ्टर द क्लासेस यू हैव टू मी क्लास पर तू आसी मु दरकार देन दैट मीन्स व्हेन यू आर फ्री माने जते बेले तुमरो तुम्हें केते बेले आसीओ व्हेनेवर देयर इज अ ट्रस्ट ऑन मो पाखे तुमरो जदि ट्रस्ट थेबो तुमे आसी फास्ट प्रोसीड नेक्स्ट जिंस होची ट्रस्ट भी थिबो
एनवायरनमेंट भी सेमती हेतिवा दरकार मींस जदि ता भीतर के पाठ पढुतबे रहउतबे ताले ठीक अछि बसी पढि पाइ मु जदि कहबे नै 10टा बेलका इट इज नॉट एनवायरनमेंट nobody should be allowed नौटा ठीक अछि किछि पिला पढुतिबे थिबो किंतु घरे भी कहउतिबे टिके चिंता चिंता भीतर अलाउ करी but when I calling at the 10 p.m. then nobody is allowed okay that means what ने आ भीतर मु निजर जो ऑनेस्टी मेंटेन करिवि as well as कौन करिवि प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करिवि प्रोफेशनलिज्म मींस प्रथमे जीवी प्रोफेशनलिज्म दैट मींस समस्ते आस जार यही प्रॉब्लम जार अछि आस तो कहबे ना एटा मोर पर्सनल डाउट अछि आई वांट टू क्लियर देन आई विल कॉल यू इन बिटवीन द टाइम जादरे के किछि लोक थिबे किछि स्टूडेंट थिबे से भीतर मु तते नै कि बुझी पाइ तो दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट प्रोफेशनलिज्म बुझी होछि तो ताथरे कोन आसीबो ना जे क्लाइंट थिबो से क्लाइंट रो ट्रस्ट फैक्टर टा क्रिएट हो रेस्पेक्टनेस आउ ट्रस्ट फैक्टर एमते क्रिएट हो जे कि तार बिलीफ सिस्टम काम करिवो से सब जिंस ओपनली कहि करिवो एंड वी हैव टू एज अ काउंसलर यू हैव टू मेक अ रिलेशन एमते हेतिवा दरकार गोटे सांग हिसाब रे हेतिवा दरकार से सब जिंस बा गोटे प्रॉब्लम सॉल्यूशन बा गोटे सॉलिसिटर हमें कहि परिबो जे कि तार सब प्रकार प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन से दे पारुची से बळा लोक हेतिवा बुझिला कि नै गोटे बिलीवनेस फैक्टर क्रिएट हेले जाकि स्टा प्रॉब्लम कहि परिबो if the opinion of the counselor the nature of the problem is such that he is not in a position to show his client the right direction he should allow his client to take the help of a right counselor or an expert in that field the counselor देखिबो जे मो क्लाइंट रो ए प्रॉब्लम सब अछि and that problem is not माने मु आरो सॉल्यूशन देई परिबि नाही so I am giving a right path you have to go to that particular counselor to solve your problem okay suppose मु किछि पार्ट रो फिजिक्स साइंस मते गोटे पिला से मैथमेटिक्स नै के केमिस्ट्री तो सर बुझी दे होला मु देखि दे नै अरे तो सांग पाखम पर्सनल ट्यूशन आसे फिजिक्स पई आसीबी सर पढाई देबे कि साइकोलॉजी पई आसीबी सर पढाई देबे किंतु जति मो पाखु आसीबो अन्य सब्जेक्ट नै कि कहबो नै केमिस्ट्री नै कि आसे कि कहबो बायोलॉजी नै कि आसे मु जति तादरो बेनिफिट बा मु नै आको पढाइले पैसाटा मिलिबो मु जति पैसा लोभरे ताको पढेबी ताले कार डिस्ट्रॉय हबो एक तो क्लाइंट रा डिस्ट्रॉय हला नेक्स्ट होची कोन नेम एंड फेम ऑफ द काउंसलर इज आल्सो डिस्ट्रॉयड से पिला जतले सक्सेसफुल न हबो देन बैड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ हमर अधिक प्रसार हो आमे जते बेले कोनोसी जगह रे बेनिफिट पाउचे वी आर शेयरिंग दैट थिंग टू वन पर्सन बट जते बेले आमे कोनोसी खराब अनुभूति पाउचे आमे गोडी गोडी पांच जन इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी बुझिस नै गोटे जगह आमे बरा खराब पइला कि गुपचुप खराब पइला 15टा संग ए जमार खानी पचा पानी दउची ए जोटी भलो थिवो हां मु भलो खाइ त केन गई त आमे गोटी बेला कहे मो सांग माने क्लोज में चल चेट बोलो ए झड़े यार अछि ना ताट ओके when the counseling session are in progress both the client and the counselor must feel the progress that they are making this is very important from the psychological perspective feeling of progress will naturally increase trust confidence toward the counselor how long the session will continue should be made clear the client or any kind of explanation in this matter is unethical and undesirable तो जेते बेले कोनोसी काउंसलिंग प्रोसेस सब चलिबो से काउंसलिंग प्रोसेस रे मोर बेनिफिट कोन होउची से बेनिफिट टा बोथ क्लाइंट आ काउंसलर जणिबा दरकार ताहाले काउंसलर अवेयर हबो जे मो जो काउंसलिंग प्रोसेस करेली आ भितरे जे क्लाइंट अछि से बेनिफिटेड होउची आ स्टेटस तापर मु नेक्स्ट कोन करी मु तुमको गोटे टर्म पढौची बा गोटे टॉपिक पढौची तो नेक्स्ट मो नॉलेज रे थिबो जे मो ओरा केते प्रोग्रेस करछि देन तमे जतबे नेक्स्ट सेशन को आसीबो मु कोन करबी सेही कंटिन्यूटी टा को नेकी आ ताहाले कोन आसीबो तुमे चैप्टर टा को रिलेट करि पारुछो ना हमर काउंसलिंग प्रोसेस एटा पढा होतला एटा हमर पढाला एथिकल इश्यूज ऑफ इन्वॉल्विंग इन काउंसलिंग एटा पढाला आपर हमें टाइप्स ऑफ काउंसलिंग हमें एटी रिलेट करि के बुझिला कि नै
तो प्रोग्रेस भी हमें देखुचे केते बड़े सरीबो as well as हमें देखुचे केते कंटिन्यूटी बुझिला apart from this principle and the value certain value are also there that also affect the client the counselor and the process of counseling in general